Good morning, everyone. I am Himanshu Bhatnagar, and I welcome you all to this session of biology. Well, have you ever imagined why do we eat food? हमें खाना खाने की ज़रूरत क्या होती है? The answer to this is when we eat food, we get energy, and we want this energy to perform various kind of vital processes. ठीक है? Interestingly, even when we are sitting or we are sleeping, our body still requires energy to perform the minute of the vital processes which are going on in our body to keep us alive. So what happens to this food? We all know that the food that we mainly eat comprises of carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, and these are all complex molecules. So the process of converting complex molecules into the simplest molecules is what digestion is all about. And in our body, there is a specific system which deals with this conversion. And this system is known as the human digestive system. So the topic that we will be covering today is actually human digestive system. Well, when we talk about food, once we take in this food, it passes through the digestive system which has got various channels. These channels, they start from the mouth of an organism and ends at the anus. And this complete pathway is technically known as the human alimentary canal. The alimentary canal in an adult human being is approximately of 9 meters. Yes, 9 meters. And this alimentary canal comprises of various parts. Now let us have a look at what are the parts of the human alimentary canal. The first part includes the mouth, which has the buccal cavity and the salivary glands. The second part is your esophagus. The third part is your stomach. The fourth part includes your liver and your pancreas. The fifth part includes your small intestine. Sixth part is your large intestine. And the last part is the anus. Now, interestingly, in this diagram, you must be seeing that some of the labelings that I have done are from blue pen, blue marker, and some are from the black pen. The ones which are done from the black marker are actually the major organs involved in the digestive system, whereas the one marked in the blue, like the salivary gland here, the liver here, and the pancreas, these three are the major glands of the digestive system. Now, in the next video, I will explain you regarding all these parts and the glands of the digestive system. Thank you for watching this video. Hello everyone, welcome back. In my last lecture, we had a basic introduction about the human digestive system. So as discussed, इस वीडियो में हम basically मैं आपको बताने वाला हूँ कि what are the parts of the digestive system and the detailing about those parts. Remember, the first part that we have to discuss is the mouth. Well, when we talk about mouth basically contains two parts of the digestive system. That is the buccal cavity plus the salivary glands. Right? Now when we talk about actually the buccal cavity, that is this place, the buccal cavity has got three parts. The outermost opening, जिसको हम basically बोलते हैं lips. So it contains three parts. First is your lips. Lips are basically nothing but they are the opening of the mouth. The second part is the tongue. And the third part is the teeth. Right?
Lips, as I told you, they are the outer openings through which we basically take in the food. Now, जो हम second part की बात करते हैं, second part is the tongue. When we talk about tongue, basically, see if you see it here. Tongue is basically a muscular organ, and the function of tongue mainly is involved in the taste. As you know, our tongue contains various kind of taste buds, and इन्हीं taste buds के कारण हमें अलग अलग taste को हम recognize कर पाते हैं. For example, if something is sweet, sour है, कड़वी है, all that we are able to taste differently because हमारे पास tongue के पास अलग अलग जो होते हैं receptors होते हैं इनके लिए, right? Now besides that, tongue का एक मेजर काम ये आता है कि जब भी हम फूड को माउथ के अंदर लेते हैं तो जो ग्राइंडिंग होती है टीथ के कारण, जो हम नेक्स्ट स्टेज में समझेंगे, उसमें जो एक रोलिंग मैकेनिज्म आता है फूड को रोल करना सो दैट सलाइवा इजीली मिक्स हो जाए, वो काम होता है आपका टंग का, राइट? सो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है लिप्स एंड टंग का फंक्शन. हमारा थर्ड पार्ट आता है टीथ. इंटरेस्टिंगली हमें ये चीज पता होनी चाहिए दैट हम जब एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, वी हैव गॉट टू सेट ऑफ टीथ. फर्स्ट सेट हमें पता है दे आर मिल्क टीथ, जो आफ्टर अ सर्टेन एज दे फॉल डाउन, एंड उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड सेट ऑफ टीथ जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, राइट? बिकॉज वी हैव गॉट टू टाइप ऑफ टीथ, द परमानेंट टीथ एज वेल एज द टेम्पररी और द मिल्क टीथ. This type of system is known as diaphodont. That is physically two different type of teething system they appear, right? As you know that when we talk of the type of teeth, you know हमारे चार major type of teeth होते हैं. That is the molars, the incisors, the canines and the premolars. राइट? नाउ इंटरेस्टिंगली जब हम अपना बेसिकली एक डेंटल सेटअप देखते हैं तो व्हाट वी रियलाइज इज लाइक दिस. द फ्रंट फोर टीथ दैट वी हैव, लाइक दीज वंस, राइट? दे आर द इंसिजर वंस. इनके बाद जो हमारा सेंटर से थर्ड नंबर का टीथ होता है, विच इज द पॉइंटेड वन, is the canine one. After canines are the premolar and the last के 3 जो होते हैं वो हमारे होते हैं molars. तो यूजुअली बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज कि आपके जो टीथ है उनका डेंटल फॉर्मूला क्या है. वेल, डेंटल फॉर्मूला इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द जॉज. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द डेंटल फॉर्मूला इज your upper jaw divided by your your upper jaw divided by your lower jaw into 2. The reason why we do into 2 is because हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं, हम सिर्फ एक साइड का लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमारे दोनों साइड का आ जाता है. जो अरेंजमेंट हम फॉलो करते हैं दैट इज योर इंसिजर्स followed by canines, premolars and then molars. So if I have to write the dental formula of an adult human being, it is incisors are 2 in number in the upper jaw, lower jaw maybe they are 2 in number, canine 1, again canine 1 in the lower jaw, premolar again 2 in number, here also 2 in number, the molars they are the 3 in number, here also they are 3 in number. So this is your only one side of the jaw. So this is multiplied by 2. The total number, if you see, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 into 2 is total 32. So once if you are required or in the board exams, अगर आपसे पूछा जाता है कि dental formula क्या होता है, then you have to define this and then you have to write this as the dental formula. I hope I have made it clear.
The next thing, since our buccal cavity thing is clear, so we will move to the salivary glands. अच्छा, टीथ में एक चीज रह गई, दैट इज टीथ का फंक्शन. वी नो दैट हमारे जो टीथ है इनका बेसिकली जो फंक्शन आता है दैट इज इन ग्राइंडिंग और च्यूइंग द फूड. बेसिकली जब हम फूड खाते हैं तो इट हैज टू बी चर्न, जैसा मिक्सर ग्राइंडर में होता है, चर्निंग होती है किसी भी चीज की और वो माइन्यूट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट कन्वर्जन, दैट माइन्यूट पार्टिकल कन्वर्जन इज डन बाय द टीथ. Right? Now comes the function of the salivary glands. Let me rub this first. Right? Now हम बात कर रहे हैं अपनी सेकेंड चीज की, which is the salivary glands. Well, salivary glands, they secrete an alkaline liquid या fluid जिसको हम बोलते हैं saliva. Right? Now this saliva is very important because जब हम फूड खाते हैं और salivation होता है तो वो बेसिकली क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है. फूड सॉफ्ट होता है तो आपने देखा होगा जब फूड सॉफ्ट होता है तो वो च्यू करना क्या होता है हमारे लिए आसान हो जाता है. कोई भी आप चीज हार्ड खाओगे और हमारा सलाइवेशन नहीं होगा तो वो हार्ड चीज को च्यू करने के लिए हमें क्या लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, which is overtaken by the saliva basically. Right? Now another very interesting function of saliva is saliva contains an enzyme which is known as salivary amylase. Now this salivary amylase as an enzyme is responsible for the breakdown of a very important element that we eat or very important food component, and that food component is carbohydrate. And this carbohydrate, by the action of salivary amylase, is broken down into a substrate which is again known as maltose. The carbohydrate that is basically in the form of starch which is there in the food is broken down. Starch is a polysaccharide. It is broken down into maltose which is actually a disaccharide sugar. Right? Another very interesting function of saliva is that saliva also contains lysozymes. Lysozymes are hydrolytic enzymes which also help in killing the microorganisms which might enter into our mouth by any kind of external sources. Right? When we talk about the salivary glands, essentially in our body, in the mouth itself, three types of salivary glands are present actually on their location. One present back of the cheek, one present at the lower jaw this side, and one just beneath our tongue. So these are parotids, that is parotid salivary gland. These are submaxillary, or that is the one which is present just at our lower jaw, and the one which is present below our tongue is known as sublingual salivary gland. I hope this session regarding the mouth is clear to you and the function of various parts present in the mouth. In our next session or in our next video, I will tell you about the esophagus and the functioning of the stomach. Thank you. So जो next topic हम cover करेंगे that is regarding the esophagus and the stomach. अच्छा, to begin with the spelling of esophagus, कई जगह आपको ये जो spelling है O से भी मिलेगी, that is OESO PHAGUS, ये भी सही है, इस spelling में कोई mistake नहीं है. Right? Now to begin with, जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना chew करते हैं तो it gets converted into a soft structure. Right? एंड ये जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो कन्वर्ट होता है इसको हम बोलते हैं बोलस. बोलस दैट इज BOLUS. सो वो चर्न पार्ट जो हमारा एक्चुअली ईसोफेगस के अंदर ट्रांसफर होता है फ्रॉम द माउथ उसको हम बोलते हैं बोलस. इंटरेस्टिंगली हमारा जो बैक ऑफ द माउथ होता है दैट इज द एंड पार्ट ऑफ द माउथ, वहां से लेके जो स्टमक के स्टार्टिंग तक का जो ट्यूबिंग सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस. ईसोफेगस एज आई सेड इज नथिंग बट इट इज अ ट्यूब
जो फूड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, राइट? इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ऐसे द क्वेश्चन कम्स, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जो खाना है वो इतना इजीली पास कैसे हो जाता है? वेल, देयर आर टू रीजंस बिहाइंड इट। द फर्स्ट रीजन इज कि ये जो ट्यूबुलर सिस्टम की इनर लाइनिंग होती है, यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। म्यूकस ग्लैंड जो कि एक अल्कलाइन म्यूकस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, सलाइवा लाइक सब्सटेंस जैसे हम बोल सकते हैं। वो म्यूकस सब्सटेंस क्या करता है, इसकी इनर लाइनिंग को कंटिन्यूसली मॉइस्ट रखता है या स्लिपरी रखता है, सो दैट द फूड कैन इजीली फ्लो थ्रू। बट इवन देन फूड जो होता है वो ईसोफेगस वाले पार्ट में अटक सकता है। हाउ दैट इज ओवरकम इज बाय द सेकेंड थिंग, दैट इज which is known as peristalsis. Peristalsis is nothing but it is a wavy, एक वेव जैसा contraction and relaxation होता है of this muscular tubule। ये जो वेवी contraction और relaxation होता है, इसके कारण which is जिसको हम बोलते हैं peristaltic movement, इस peristaltic movement या peristalsis के कारण जो फूड है, फूड हमारा इस ईसोफेगस से इजीली स्टमक के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। डन। नाउ स्पिंटर आप देखोगे यहां पे ईसोफेगस के ओपनिंग पे एंड क्लोजिंग पे देयर आर स्पिंटर मसल्स प्रेजेंट। स्पिंटर मसल्स आर नथिंग, दे आर द मसल्स व्हिच कंट्रोल द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ राइट द फूड, whereas the outward movement of food into the stomach, that is कि हमारे स्टमक में कितना खाना जाना है वो कंट्रोल होता है एक्सटर्नली बाय दिस स्पिंटर मसल। एक और स्पिंटर मसल प्रेजेंट होता है एंड ऑफ द स्टमक पे, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर मसल, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द स्टमक जो होता है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। तो एसेंशियली ये जो स्पिंटर मसल हो गया इसको बोला पाइलोरिक स्पिंटर, और ये कंट्रोल करता है कि फूड हमारा कब बाहर जाएगा। तो एसेंशियली जब फूड हमारा ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है तो हमारा पाइलोरिक स्पिंटर मसल जो होता है वो होता है क्लोज्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द फूड स्टेज इनटू द स्टमक। सो एसेंशियली ईसोफेगस की अगर हम बात करेंगे, ईसोफेगस इज अ ट्यूब व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम और द बोलस फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, राइट? डन। Very interestingly, esophagus is also one of those parts of the alimentary canal जहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा। Yes, यहाँ पे डाइजेशन की कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही, बिकॉज esophagus जस्ट एक चैनल है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राइट? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम स्टमक के। जब हम स्टमक की बात करते हैं, स्टमक एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, राइट? इट इज अ जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन जिसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, और इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं रग्स, ROGUE, रग्स। ये जो रग होते हैं, जब फूड स्टमक के अंदर आता है तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स तक इट स्टेज इनटू द स्टमक, और ये 4 से 5 घंटे के अंदर ये रग्स जो इनफोल्डिंग होती है स्टमक की, उसके थ्रू फूड वापस से क्या होता है, और ज्यादा चर्न होता है और एक पेस्ट में कन्वर्ट होता है। उस पेस्ट को हम बोलते हैं काइम, CHYME। सो इंटरेस्टिंगली जो च्यूड फूड स्टमक के अंदर आ रहा है उसको हमने बोला बोलस, और जो पेस्ट सब्सटेंस स्टमक के बाहर जा रहा है दैट इज नोन एज काइम, राइट? सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ जो स्टमक आया दैट इज जो बोलस आया उसको कंप्लीटली चर्न अप करके पेस्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज काइम। एडिशनली स्टमक इज अ पोर्शन जहां से मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन जो होता है आपका स्टार्ट होता है। हमने देखा था माउथ में जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, स्टमक के अंदर हमारा एक्चुअली प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। ना जो हम स्टमक के अंदर की बात करते हैं, स्टमक में जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं। जो सबसे पहला सिक्रीशन होता है स्टमक के अंदर दैट इज ऑफ HCl व्हिच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। माइंड यू, ये जो HCl हमारा इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट करता है, इसका जो pH होता है इज अप्रोक्सीमेटली 1.8। Yes, 1.8 which is highly acidic. Now इस एसिडिटी के कारण हमारी जो इनर लाइनिंग ऑफ जो स्टमक है वो ब्रेक डाउन भी हो सकती है, which is taken up by the second thing which is mucus. Mucus again is secreted by the inner lining of the stomach, and mucus क्या करता है,
इस एसिडिक नेचर को यहाँ पे क्या करता है, एल्कलाइन या बेस फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, एक एल्कलाइन एनवायरमेंट में मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये HCl को अल्कलाइन फॉर्म में ही कन्वर्ट होना है बाद में, तो HCl का सीक्रेशन क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज एज आई सेड कि स्टमक का जो सेकेंड मेजर फंक्शन है दैट इज डिवीजन और कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स और ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, जो कि करता है हमारा थर्ड सब्सटेंस जो स्टमक से आता है विच इज नोन एज पेप्सिनोजन। वेल पेप्सिनोजन की जब हम बात करते हैं, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है, एक इनएक्टिव केमिकल है। यस, इनएक्टिव मतलब वो फंक्शनल फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होता, वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में ही क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये पेप्सिनोजन जब आता है अपने HCl के प्रेजेंस में, तो इट गेट्स कन्वर्टेड, यहां पे मैं लिख देता हूं इनएक्टिव का I, राइट। जब ये आता है HCl के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, which is an active enzyme, mind you. And this pepsin actually helps in the conversion of proteins into peptones and peptides. ये जो पेप्सिन जो एक्टिव हो गया एसिडिक पीएच में, इसने क्या किया, इमीडिएटली जो प्रोटीन प्रेजेंट था बोलस में उसको कन्वर्ट किया पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स आर नथिंग बट दे आर स्मॉलर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स बेसिकली, राइट? Getting my point here? Now interestingly, as soon as this is secreted, it will convert pepsinogen into pepsin, and within seconds the mucus is released, so that the mucus converts the environment here into alkaline form, or it protects the inner lining of the stomach. तो यहाँ हमारे दोनों तीनों जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाते हैं। दैट इज HCl का सीक्रेशन के कारण पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, इमीडिएटली म्यूकस सीक्रेट हुआ जिसने अल्कलाइन को न्यूट्रलाइज किया और इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या किया, प्रोटेक्ट किया, एंड देन जो हमारा पेप्सिन कन्वर्ट हुआ उसने प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। बिसाइड्स दिस इंपॉर्टेंट रोल ऑफ HCl, एक और इंपॉर्टेंट रोल ऑफ HCl आता है इन किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, बाय चांस अगर माइक्रोब्स फूड के थ्रू हमारे स्टमक तक चले जाते हैं, तो ये जो HCl होता है ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करता है, राइट? सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डन? नाउ एज आई टोल्ड यू, जो फूड यहां से बाहर आया उसको हमने बोला काइम। अब काइम पे कौन से एंजाइम्स एक्टिवेट करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। Thank you. So the next parts are the liver, the pancreas and the small intestine. सबसे पहले हम क्या करते हैं, let us have a look at the overview how the structure arrangement is. हमने स्टमक तक देख लिया था। स्टमक के बाद जब हम इस ट्यूब में मूव करते हैं, राइट? सो एज यू नो, स्टमक के बाद वाला जो पोर्शन आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नाउ जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं, विच इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर्स इन लेंथ। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये एसेंशियली 3 पार्ट्स में क्या होता है, हमारा डिवाइड हो जाता है। दिस कर्व इज नोन एज ड्यूडेनम। ये कर्व जो फ्लैटन होता है यहाँ पे, दिस ट्यूब इज नोन एज जेजुनम, एंड जब ये फर्दर कॉइलिंग पे आता है तो दैट फर्दर जो अच्छा खासा कॉइल्ड पोर्शन होता है दैट इज नोन एज इलियम। सो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट योर small intestine. Now just near to the stomach you also see the largest organ of our body, which is actually not the largest organ, actually it is the largest gland of our body. The largest organ of our body is actually skin. So largest gland of our body, which is known as liver. When we talk about liver, liver is a gland and it produces secretions. It does not produce any kind of enzymes, but it has secretions which are known as bile salts and bile juices. Now these bile salts and bile juices, they are produced in liver and they are stored in this structure which is known as gallbladder.
Now when they are temporarily stored here, you will see they open up into this duct. This duct is also common for your third gland of the digestive system, which is also known as your pancreas. See this leaf-like structure, this is nothing but this is the pancreas, right? So the secretion of the gallbladder and the pancreatic juices, they come together through this duct in the duodenum. Clear? I hope this structural arrangement is clear to you now. Now let me tell you, this is the structural arrangement. Now let me tell you what all are the individual functions of these two major these two major organs, that is the liver and the pancreas. Done? So let me rub this for you. Now we'll start with the first thing, that is your liver. As I told you that liver produces a substance, a liquid जिसको हम बोलते हैं bile juice plus bile salts. Now both these secretions combined together, they are basically alkaline in nature. Alkaline और basic, जिसको हमने 9th class में acid bases के form में पढ़ा है, these are basic in nature. A very interesting question comes कि liver के जो secretion होते हैं, if you see bile juices and bile salts, इसमें कोई भी enzymes present नहीं है. So the question which is asked is that liver, it does not secrete any kind of enzymes, yet it is very important part of digestion. How come it is so? Or justify this statement? Well, the reason being, these two substances, that is bile juices and bile salts, they play a very important role in a process which is known as emulsification of fats. Emulsification means conversion of fats, which are big molecules, into small oil droplets or small molecules. So the fats, through emulsification, because of your bile juices and the salts, they get converted into small oil droplets, right? Am I clear to you? These small oil droplets, इनको हम कई बार ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह भी बोलते हैं, स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स को ट्राइग्लिसराइड भी हम बोलते हैं. So this is how emulsification of fat happens. So understand, if the question comes that how are bile juices important, because they play a very important role in emulsification of fats, that is breakdown of fats into smaller oil droplets or triglycerides. Done? Then comes the role of your pancreas. Now pancreas as a gland produces a juice which is known as pancreatic juice. Okay, and these pancreatic juices or secretions, they contain various type of enzymes. Right? So what I'll say here is pancreatic juice, it contains various kind of enzymes. Now let us have a look at the type of enzymes which it is producing and the molecules on which it will act to break it down into further smaller molecules. So the first enzyme that it produces is pancreatic amylase. Now if you remember, हमने एक और टाइप का amylase पढ़ा था, which was salivary amylase, जो saliva में present होता है, जो वहां पे carbohydrates, that is starch को break down कर रहा था maltose में. Essentially क्योंकि ये भी amylase एंजाइम है, but because ये pancreas से produce हो रहा है, इसलिए हमने इसे बोला pancreatic amylase. इसका function भी same है.
जो बचा हुआ हमारा स्टार्च है उसको ये ब्रेक डाउन करेगा माल्टोज में। डन? एम आई क्लियर? नाउ कम्स द सेकेंड एंजाइम। इसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सेकेंड एंजाइम जिसको हम बोलते हैं माल्टेज। एज हम ये एंजाइम के नेम से समझ सकते हैं दैट माल्टेज एक्चुअली एक्ट्स ऑन माल्टोज एंड दिस माल्टेज व्हेन इट एक्ट्स ऑन माल्टोज ये क्या करता है, ये माल्टोज को फर्दर ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज प्लस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ glucose. So two glucose molecules. So as I told you in the beginning, maltase is actually an enzyme जो maltose को convert करता है। maltose is a disaccharide, दो sugar unit combine करता है, that is दो glucose unit इसके अंदर present होती है। Clear? जो third enzyme हमारा आता है यहाँ पे, उस third enzyme का नाम है lipase। और ये जो हमारा लाइपेज है ये क्या करता है, हमारा जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के बाद जो ऑयल ड्रॉपलेट्स बचे थे, रिमेंबर, जिसको हमने ट्राइग्लिसराइड्स भी बोला था, उनको ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में। डन? Then comes our fourth important enzyme जिसको हमने बोला trypsin. Now trypsin is another proteolytic enzyme. Proteolytic मतलब जो प्रोटीन्स पे एक्ट करके प्रोटीन की लाइसिस करे, proteolytic, lysis of proteins, that is breakdown of proteins. So हमारा जो बचा कुचा प्रोटीन बचा था, remember पेप्सिन के बाद, that is हमारा प्रोटीन्स प्लस पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड्स, ये इन तीनों को कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स नोन एज अमाइनो एसिड्स। क्लियर? जैसे हमारा स्टार्च एक पॉलीमर था या पॉलीसेकेराइड था ग्लूकोज का, वैसे ही हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स हमारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, नॉट पॉलीसेकेराइड, पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। सो दीज आर singular structures when they combine together, amino acids, they form your proteins. So this is the actual digestion step which takes place इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का भी जो जिजनम पार्ट देखा था हमने, जिजनम पार्ट में ये जो हमारा डाइजेशन है ये कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स, बिकॉज कई बार सीबीएसई बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है दैट राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स two type of secretions, the pancreatic juices from the pancreas and the bile salts and the bile juices from the liver, and ये complete process of digestion चलती है small intestine में। इसमें remember एक और emulsification of fat जो हमने इससे पहले पढ़ा था, वो भी process इसमें क्या हो जाता है, add up हो जाता है। Finally ये जो conversion है, इससे जो glucose molecule होता है, ये हमारा small intestine में आगे जो ileum वाला portion होता है वहां से एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, विच वी विल बी कवरिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप अभी तक हमने जितना किया था दैट वुड बी क्लियर। वेलकम बैक। दिस इज एक्चुअली द लास्ट पार्ट ऑफ आवर और लास्ट ऑफ द वीडियोज ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। वेल, in the last video we had seen the process of digestion till the small intestine. Now which is this portion? As I told you, this is the small intestine, which is actually the longest portion of the human alimentary canal, approximately 6 meters in length in an adult human being. Maximum of the digestion जो मैंने आपको बोला वो यहीं पे complete हो जाता है। Now this small intestine is further infolded. As you can see, it is further infolded, and these infoldings
of the small intestine, they are known as villi. Right? So the question comes, why there is infolding? Well, simple सी बात है, infolding होगी तो surface area क्या होगा, उस चीज का increase करेगा. Surface area increase करेगा मतलब जो एब्जॉर्प्शन है, एक्चुअली जब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो क्या होना होता है? वो एब्जॉर्ब होना होता है. सो ये जो विलाय होते हैं, विलाय के अंदर माइक्रो विलाय प्रेजेंट होती है, वहां पे न्यूट्रिशन जाता है, एंड देन विद इन दीज चैनल्स हमारे ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं, जहां पे जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड अदर फैटी एसिड्स एंड ऑल क्या होता है, वो एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है फॉर द प्रोसेस जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं एसिमिलेशन. दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ these energy carrier or nutrient molecules within the blood to the various cells, and जहां पे cells में जाके उनका further breakdown होता है to obtain energy, that is assimilation. वो हमारा कंप्लीट होता है एट द सेल्यूलर लेवल, बट हमारा बिगिन कहाँ होता है? एट द इंटेस्टाइनल विलाई. सो इंटेस्टाइनल विलाई से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई में क्वेश्चन आता है दैट हाउ आर विलाईज डिजाइंड टू हेल्प इन डाइजेशन, और हाउ डज विलाई हेल्प इन डाइजेशन? Answer is that villi, they contain multiple small folds. There are multiple small folds in the small intestine, which increases the surface area for absorption of nutrients. More is the nutrients absorbed, simple सी बात है, उतना ही ज्यादा उनका ट्रांसपोर्ट होगा एंड एनर्जी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? जनरेट हो पाएगी. क्लियर? Now this is the place where the small intestine actually ends and meets into the large intestine. The large intestine itself is divided into three portions: the cecum, then the colon, and then the rectum. Right? Now, the cecum is the initial beginning part which has a pointed end, जिसको हम बोलते हैं appendix. The appendix, as you might be knowing, is basically a vestigial organ. Vestigial means an organ which was actually functioning in our ancestors, but बिकॉज ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम हमने उस ऑर्गन को यूटिलाइज किया ही नहीं है, तो वो ऑर्गन का फंक्शन क्या हो गया है? वो ऑर्गन का फंक्शन नलिफाई हो गया है, या वो ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर दिया है. सो दोज आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स. राइट? Another example of in fact vestigial organs are ear pinna muscles. If you can see, animals can move their ear pinna because they want to move the insects away. We do not do this because we have been given hands through which we can move the insects or the flies away. So again, ear pinna muscles, कुछ लोगों को देखो, कुछ लोग automatically ear pinna हिला सकते हैं. Like those ear pinna muscles, they are also vestigial organs now. Now once the undigested food, it enters into the intestinal portion, here it remains there for some time. Essentially जब हम large intestine की बात करते हैं, तो large intestine का दो major function आते हैं. The first function is absorption of water from the undigested or the remaining food, so that वो एक pellet या solid form में convert हो. And then second is the storage. So this is the ascending colon, this is the transverse colon, and this is the descending colon. Right? यहाँ पे basically जो भी आपका undigested food material present है, उसके अंदर से water का absorption होगा, so that water again is retained back into your body. And then temporary storage होगा of the waste material in the rectum. And then there is the anus, which again has a sphincter muscle. Yes, anus also has a sphincter muscle, जिसको हम बोलते हैं anal sphincter muscle. It helps in controlling the outward movement of the waste material or the fecal material. Right? Now, this on a whole completes the function of your small intestine as well as your large intestine. And now with this we come to the end of this session, that is the end of the topic, which is human digestive system. I hope all the things which I have explained in my these 3-4 videos must be clear to you. If there is any kind of queries that you have, you can ask me for those queries, or you can WhatsApp me those queries on my WhatsApp number. Thank you.